Is it visible? Yes, sir. Okay. So just keep ready your copy and with a pen. Today we will going to start the vector operators known as gradient, divergence, and curve. Am I audible, all of you? Yes, Yes, sir. sir. So Yes, sir. these are nothing but the operators, gradient, divergence, and curl. These are the operators of vectors. I think vectors you have got in the previous semesters already. Yes, sir. Have you got vector dot product is there, vector cross product is there, isn't it? So Yes, sir. those things will apply here. We will apply here for the operators gradient, divergence, and curl. Okay, so these three things have there some definite formulas how to find gradient, how to find divergence and curl. Then with their physical interpretations are also there, as well as their properties. Okay, so we will first start with the meaning of these three things, that is gradient, divergence, and curl. It is nothing but what the gradient of a scalar field. So scalar field will work. That means we need to find gradient of a scalar field. Who want to join? Admit. Okay, scalar field means what? Simply a function. Suppose you are considering. Suppose a function of x, y, z. F of x, y, z equal to suppose x square plus y square plus z square. Nothing else. That is a simply a scalar field of functions. Why? Because there is no vector symbol is there. So vector field होने से क्या होता है? वहाँ में definitely I cap, j cap, and k cap will come. Okay, but for a scalar field, no I cap, j cap, and k cap. Those are the unit vectors. ये तो तुम लोग को मालूम ही होगा because in scalars and vectors, what is the basic difference? Scalar में क्या है? What is the basic difference between scalar and vectors? Magnitude and direction should be in vector, but in scalars there will be what? In scalar there will be no magnitude, isn't it? So gradient में क्या होगा? हम लोग gradient का gradient निकालेंगे कौन सा functions का? जो scalar field functions हो. That is the functions where only the variables are appearing, not the unit vectors. That is I cap, j cap, and k cap. Okay. Then divergence of a vector field. Yes. So divergence can be find. Hello. Hello. So divergence of a vector field means what? We have to find divergence of a particular function which is representing a vector field. Vector means what? Vector field means what? Suppose simply again the previous example I have considered, f of x, y, z equal to suppose x square I cap plus y square z cap plus z square k cap. Since the what existence of those unit vectors I cap and j cap and k cap, that particular field should be known as the vector field. Similarly, कर्ल भी हम लोग का वेक्टर फील्ड से ही निकाला जाएगा. ठीक है. सो जो नीचे का दो है डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये दोनों निकालने के लिए हम लोग को जो फंक्शन होगा वो एक वेक्टर फील्ड फंक्शन होगा, बट a gradient can be find out from a scalar field where no unit vectors will exist. Understood? Simple thing is that. So next is what? There are 2 points to get over about it. What are those? The mechanics of taking the gradient, divergence, or curl, for which we will need to brush up your multivariate calculus. Multivariate calculus means what? यहाँ में हम लोग को ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल निकलने के लिए कैलकुलस का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो सब यूज करना होगा. That is starting from partial derivatives, ordinary derivatives, in these things. Okay, and the underlying physical meaning, that is
why they are worth bothering about. मीन्स जो जो हम लोग का ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड कर्ल है उसका जनरल फिजिकल मीनिंग क्या है. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड का मतलब फिजिकली कैसा होता है, एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, व्हाट इज द फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट. So those things we will learn about here. Okay, now see. Next, first we will start from the gradient of a scalar field. So, what is the gradient of a scalar field? See, the definition is here. If u r, that is equals to u x y z. Simply, just I told earlier about the suppose function, a function containing the variables x, y, and z. Okay, is a scalar field. That is a scalar function of the position r. R is what? A position vector of x, y, z. Okay, in 3 dimensions. Then its gradient at any point is defined as the Cartesian coordinates by C. Grad u. Grad u means what? Grad u means what? Gradient of u, and it can be defined by, see this thing, del u by del x I cap in plus del u by del y j cap plus del u by del z k cap. This is the definition. Okay, so gradient u को हम लोग दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं. See, it is usual to define the vector operator which is called del or nabla. ये nabla का मीनिंग है, ये वेक्टर ऑपरेटर है. That can be expressed as what? I del del x plus j del del y plus k del del z. That is the expression for nabla, and you have to remember this. Okay, because whenever you are going to find out the gradient of a scalar field function, that nabla is required. Fine. So see, gradient u equal to nabla u. If you just put the values of nabla in 5.3, what is that? I del del x of u, that is I del u del x plus j del u del y plus k del u del z. That is the definition of gradient of a scalar field. Now, see, since nabla is a vector operator and u is a scalar field, whenever you are going to take the multiple of that nabla and the scalar field, you will always have a vector field. See, because del u del x I cap, del u del x I cap is definitely a vector function because u is a function of x, y, z. Suppose u का वैल्यू तुम लोगों को दिया हुआ है. Okay, take a simple example. Take a simple example. Write down on your copy. Just write down on your copy. Given, write down, given capital F within bracket x comma y comma z, write down, capital F within bracket x comma y comma z, okay, equals to, simply take the equation of the circle, x square plus y square plus z square. Capital F within bracket x comma y comma z equal to x square plus y square plus z square. This is the scalar field function. So find, write down, find grad f. Okay, find grad f, that is gradient. Gradient से grade आता है, grade capital F. So gradient of f का value क्या है? Just write down this definition be given in 5.1. Gradient of f equal to, लिखो grad f equal to del f del x. यहाँ में function f दिया हुआ है, u नहीं है. Same thing. Del f del x I cap plus del f del y j cap plus del f del z k cap. Okay, del f del x I cap plus del f del y j cap plus del f del z k cap. So you can find out the term separately. What is del f del x? Tell me. Can you tell me?
What is The del f del solution x? is 2x I cap plus 2y j cap plus 2z k cap. Very good. Yes, because del f del x is what? Del x of f. F means x square plus y square plus z square. Since we are taking the partial derivative with respect to x, so del x of x square will only exist. Others are constant. So twice x I cap plus twice y j cap plus twice z k cap. So यहाँ में तुम लोग देख सकते हो कि ग्रेडियंट जो f है, हेलो, gradient of f is nothing but a vector quantity. You can see क्यों वेक्टर क्वांटिटी हो गया, बिकॉज नो डाउट f इज अ स्केलर फील्ड, बट f के साथ जो वो नबला ऑपरेटर यूज हुआ है। किसी का माइक ऑन आ रहा है, काइंडली जस्ट, हेलो, जस्ट अनम्यूट योर माइक, जस्ट म्यूट योर माइक। किसी का माइक ऑन आ रहा है, मतलब हेलो, दीपू से थ्री प्लीज म्यूट योर सेल्फ। दीपू से थ्री, अरे दीपू से थ्री प्लीज म्यूट योर सेल्फ। हेलो दीपू से थ्री, ओके। So ultimately, what we have seen that gradient of a दीपू से थ्री, उसका बार बार क्यों, दुलाल, दुलाल, Yes, sir. just Yes, told sir. him, just told Deepu Satri to mute himself. Okay, sir. Okay, so ultimately what we have found that whenever you are going to find the gradient of a scalar point function, you will always have a vector field. Okay, so यहाँ में तुम लोग का illustration दिया हुआ है. Note immediately that yes, see, gradient nabla u means nothing but gradient u is nothing but a vector field. Okay, so यहाँ में तुम लोग का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है. See here, all of you are seeing this one, worked examples on gradient evaluation. These are very simple examples, so this type of questions will not come in your exam actually. So इसके लिए थोड़ा difficult questions मैं तुम लोग को choose करूँगा. Thus these are the simple examples to demonstrate the definition of gradient, nothing else. See, capital U, which is a function of x, y, z, scalar field function, it is simply given as x square. Okay, y square y और z का नहीं है. So नाबला u क्या होगा? तुमको x square बाहर भी लिख सकते हो और simply write u inside also. So del u del x I cap, del u del y j cap, del u del z k cap. Since only function of x will exist because other there are no variables for y and z, so only del u del x I cap is exist. So what is the value of del u del x? Twice x, no? Twice x I cap. Others are 0 because the function u not contains any variables of y and z. Simple. Okay. Now see the next example. It's very important. Yes, that I have already discussed. U equal to r square. All of you seen the second example? Yes, sir. Seen the second example, u equal to r square, na? Okay, just Yes, sir. in your copy, just write down what is r actually. Okay, वहाँ में तुम लोग लिख सकते हो. In the second example, you just write down r vector लिखो, small r ऊपर में vector लिखो, small r vector equal to small x I cap
plus small y j cap plus small z k cap. All of you have written r vector equals to small x I cap plus small y j cap plus small z k cap. Okay, ठीक है? uh, Okay, uh, sir. equal to be the position vector, with respect to the particles x, y and z. अंडरस्टूड? बाद में अगर किसी प्रॉब्लम में r का वैल्यू तुम लोग को दिया भी नहीं है, तुम लोग को यही लेके चलना है, ठीक है? r वेक्टर इक्वल टू x I कैप प्लस y j कैप प्लस z कैप. ओके, जस्ट a small reminder from the vector concept. वहाँ में एक डेफिनेशन था, suppose a small is a vector quantity, that is a vector ना. So what is the value of a vector dot a vector? Have you remembered? Suppose small a is a vector quantity. So what is the value of a vector dot a vector? Hello? What is the value of a vector dot a vector? It is nothing but a square. Okay. So यहाँ में भी r vector dot r vector equal to r square होता था. But r square का वैल्यू x square y square z square कैसे आ गया? ये तुम लोग निकाल सकते हो, बिकॉज वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करना है. सो लिखो तो तुम लोग नेक्स्ट लाइन में r वेक्टर डॉट r वेक्टर इक्वल्स टू r vector dot r vector equals to, within bracket लिखो xi cap plus yj cap plus zk cap, bracket close, dot again xi cap plus yj cap plus zk cap within bracket. Okay, after that you have to give implied symbol, because r dot r, that is r vector dot r vector is nothing but equals to r square, implies r square लिखना, equal to वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, i dot i equal to 1 होता है, z dot j equal to 1, k dot k equal to 1, others are 0. so x I cap dot x I cap का वैल्यू होता है i dot i is 1, so x square, so r square equal to अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, x square plus y square plus z square. इसी को मतलब यहाँ में डायरेक्टली दिया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम इलैबोरेटिंग दैट, हाउ r square equal to x square plus y square plus z square. Okay, hello, am I audible? Yes, sir. Got it, sir. Got it, sir? No, got it. Okay. So r square Yes, equal sir. to x square plus y square plus z square. So बाद में भी अगर तुम लोगों को किसी प्रॉब्लम में सिंपल सपोज r का वैल्यू नहीं भी दिया है, तो तुम लोग जान लो कि r वेक्टर का इक्वल्स टू हमेशा xi के प्लस yj के प्लस z के होगा फॉर 3 डायमेंशन. फाइन, फॉर 3 डायमेंशन के लिए, बिकॉज यहाँ में x y j क्या है, components of what axis what along x y and z axis, और i cap j cap and k cap क्या है, यूनिट वेक्टर्स ना, along x and y and z axis. So r vector equal to xi cap plus yj cap plus zk cap is the position vector होगा in 3 dimension. 2 dimension होने से क्या आ जाएगा, xi cap plus yj cap. और उसके लिए अभी r square equal to कैसे निकलेगा, r dot r, that is nothing but equal to x square plus y square plus z square. So already we just solved this one just a few minutes ago, that nobla u, that is gradient of u, just simply solve it na, twice xi cap plus twice yj cap plus twice zk cap, just earlier we have solved. इसको हम लोगों ने शॉर्टकट क्या लिख सके हैं, यहाँ में इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेने से क्या आएगा, xi के प्लस yj के प्लस zk के, दैट इज नथिंग बट इक्वल टू, यहाँ में r दिया हुआ है बट दैट इज r वेक्टर, सो इट इज इक्वल्स टू 2r वेक्टर, बिकॉज r वेक्टर इज नथिंग बट xi के प्लस yj के प्लस zk. Okay, so in this way with these 2 examples we just find the how to evaluate gradient. Next one more example is here. Okay,
Okay, very good example. All of you hearing? Example 3 देखो. Hello? Yes, sir. Is it visible? Example 3? Yes, 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 sir. sir. ओके सो एक फंक्शन दिया है, देखो अच्छी तरह देखना, u इक्वल टू सी डॉट आर. यहाँ में c कांस्टेंट बताया गया है, बट c और r जो है वो थोड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है. दैट इज व्हाट दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, नथिंग एल्स. ओके, c इज ए कांस्टेंट वेक्टर, नथिंग एल्स. c जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है. ठीक है. सो पिछले दो एग्जांपल में u का वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ था. इसमें u इज ए value, u what is a function whose result is the dot product of the what constant vector c and the position vector r. So divergence of u निकालने के लिए पहले तुमको क्या करना है, रफली तुम लोग ये निकाल लो तो पहले, बिकॉज c डॉट r का वैल्यू कितना होता है. ओके, सो लिखो c डॉट r. इस क्वेश्चन का डाइवर्जेंस सॉरी ग्रेडियंट निकालने से पहले तुम लोग वो एक काम करो, देखो हियर c, ये जो c जो है, ये c इज अ कांस्टेंट जो लिखा है, इज अ कांस्टेंट वेक्टर. दैट इज, सो लिखो c वेक्टर, c वेक्टर सेम है. c इक्वल टू c1 i कैप लिखो, c इक्वल टू c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप. ओके, एंड r इक्वल टू जो मैंने अभी पहले लिखा, एंड r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप लिखा. c यहाँ में बोल्ड में लिखा है, मतलब ये c वेक्टर ही है. ठीक है, एंड r इज रिटन अगेन इन बोल्ड लेटर एंड नथिंग बट इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज r वेक्टर. यहाँ में लिखा डायरेक्टली नहीं है. सो c डॉट r का वैल्यू क्या होगा? c डॉट r मीन्स व्हाट, c का क्या क्या है, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप, एंड r का क्या है, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप. सो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने से क्या होगा, i डॉट i इज 1, z डॉट j इज 1, k डॉट k इज 1. सो c1 x होगा एक प्लस c2 y प्लस c3 z. सी इन द नेक्स्ट लाइन द वैल्यू इज गिवन. ओके, c1x plus c2y plus c3z, that is the value of nothing but ये c dot r का वैल्यू. ओके, सो हम लोगों को निकालना है कि ग्रेडियंट ऑफ u निकालना है, दैट इज नाब्ला u. सो नाब्ला का वैल्यू पुट कर दो, i del del x प्लस z del del y प्लस k del del z. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u का वैल्यू है c dot r. द वैल्यू ऑफ c dot r इज नथिंग बट इक्वल्स टू c1x प्लस c2y प्लस c3z. सो अभी क्या निकालना है फिर? ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करना है. सो क्या होगा, पहला तो आते हैं आई के लिए ना. सो आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ c1x प्लस c2y प्लस c3z क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई कैप डेल डेल एक्स ऑफ c1x प्लस c2y प्लस c3z? c2y c3z तो जीरो हो जाएगा. सो दैट इज Only C1. yeah, only c1 is left. Similarly for the j cap term, it should be only c2 will left, and for the k cap term it should be only c3 will left. So ultimately nabla u हो जाएगा c1 i cap plus c2 j cap plus c3 k cap. Okay, which is nothing but what, c, small c or small c vector simply you can say, because it's a vector quantity. Okay, so if capital U is the dot product of two vector quantities, one is a constant function and the other is a what, position vector, then the gradient of that scalar field should be is nothing but a constant function, you can see. So यहाँ में तुम लोग as a note लिख सकते हो in number 3 example, just write down one note. लिखो, that is divergence, sorry, gradient of the scalar point function u is a constant function, constant vector point function. लिखो नोट में लिखो, that is
gradient of the scalar point function capital U is a constant vector point function. Okay. ओके, ये 4 वाला अभी तक तुमको डिस्कस नहीं करना है. Done? Okay, just write down some examples then for finding gradient. Because find the gradient write down. Find the gradient of the scalar point functions. Number one लिखो, capital F within bracket x comma y comma z equals to capital F within bracket x comma y comma z, that is equals to x cube I cap plus y cube j cap plus z cube k cap. ठीक है? Done? All of you? Question लिखा कि नहीं? Yes, sir, done, sir. Okay, next question लिखो. Capital F within bracket x comma y comma z equals to लिखो within bracket x square minus xy within bracket x square minus xy I cap भागा बाहर into I cap plus within bracket y square minus yz, उसके बाद into j cap plus z square minus xz within bracket close k. That is क्या लिखा, f of x y z equal to what, x square minus xy I cap within bracket then plus y square minus yz within bracket j cap plus z square minus zx within bracket close k. Okay, and one more question, last one, write down. F of within bracket x comma y comma z equal to write down x plus y plus z whole square. X plus y plus z whole square. Okay, x plus y plus z whole square.
सो इन तीनों एग्जाम्पल का तुम लोग को ग्रेडियंट निकलना है, दैट इज नोबला एफ। सो तुम लोग करके मुझको व्हाट्सएप में सबमिट करना है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? You have to do these 3 examples and submit me in the WhatsApp group. Okay? यहाँ में आज हम लोग ग्रेडियंट का फिजिकल मीनिंग भी मतलब पढ़ना था, सिग्निफिकेंस क्या है मतलब ग्रेडियंट का, वो मैं एक साथ कराऊंगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और व्हाट कार्ल का। नेक्स्ट क्लास सुनो, नेक्स्ट क्लास तुम लोग का ओके, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग का होगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फील्ड, उसका मतलब कैसे करते हैं। उसके बाद कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड, कार्ल कहाँ है, कार्ल ऑफ दिस कार्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड फंक्शन। सो इन लोगों का एग्जांपल करने के बाद आई विल डिस्कस द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ दैट। ओके, understood? Okay, sir. So let me stop this sharing option, stops here.